गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। और गना शॉट में आप सबको स्वागत है। नमस्कारम एंड लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। टुडे आई थॉट I'll give some thoughts about PLA to all of you. PLA के बारे में मेरा विचार क्या है और उनका PLA से ज्यादा उनका जो जियो मिलिट्री कंस्ट्रेंट्स क्या है और उनका पॉलिटिको मिलिट्री कंस्ट्रेंट्स क्या है, क्योंकि आमतौर पर इनके बारे में हम बात नहीं करते। When we talk about PLA, we only talk whether what is the strength of the PLA, whether they have weapon systems, whether they can prosecute war, etc., etc., etc. We don't understand कि PLA का constraints क्या हैं, उनका what are the problems which PLA faces और किन मुश्किलात में वो गुजर रहे हैं और उनका क्या limitations हैं। And in India, a lot of us are clouded by the fact that in 62 we were soundly defeated. And when you speak to a lot of people of my generation who felt at that, many of us in India feel that the China man is 20 feet tall, they have passed this psychology on to our next generation. But in this generation, the China man has also changed. What we don't understand is the China man has changed in 2-3 ways. एक तो वो अमीर बन गया, वो देश जो है ना उसमें पैसा ज्यादा आ गया, और दूसरा जो है जो उनके जो पीपल जो हैं वो कमजोर पड़ गए। आमतौर पर ये हम समझते नहीं है, और इनका जो कम्युनिस्ट राज होने के नाते उनका जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा होता है और वो इतना अपना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि ये वही आदमी है जो हमें हराया है और दोबारा हराएगा। राइट, इसमें हम अपना ताकत के बारे में हम भूल गए। राइट, हम भूल जाते हैं और हमारा क्या ताकत है अगर हम उनके वीकनेस के ऊपर लगाएंगे तो जीत हमारा निश्चित है। और ये मैं सिर्फ लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स के बारे में। राइट, आज हम अपना ताकत के बारे में नहीं बात करेंगे, हम मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि PLA और चाइना में मिलिट्रली क्या खामियां हैं। और मैं ये जो है ना एक कहानी की तरह आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि कहानी सबको अच्छा लगता है और समझ में भी आ जाता है। सबसे पहले ये एक आर्टिकल निकला था फॉरेन अफेयर्स में, जी जिनपिंग सेज ही इज प्रिपेयरिंग चाइना फॉर वॉर। ये इसके बारे में पिछले एक वीडियो में भी मैंने बताया। ही इज प्रिपेयरिंग चाइना फॉर वॉर, और ये वेर एवर ही गोज, किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जब जाता है वो सबको बताता है कि प्रिपेयर फॉर वॉर। ही इज नॉट ओनली preparing for war, he is not only preparing people for war, he is also preparing the nation for war. And this was very evident in the 20-party Congress in October when he came in for the third term. Jab security, military preparedness and militarily capturing Taiwan was high on the agenda. It got repeated in the 22 sessions earlier this month, in which they have given a great jump in the defense budget. Not only in the defense budget, they have also given a great jump in the internal security budget. Overall अगर आप देखेंगे तो इनका जो सिक्योरिटी का बजट जो है तकरीबन 7%
एक्सटर्नल सिक्योरिटी या डिफेंस के लिए, और 7 या 8% वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. ओवरऑल अबाउट 16-17% जंप दे गिवन to security, and it is virtually now a security state. And security overrides their thinking. That thinking is being projected to everyone, and that is why when Xi Jinping says he's preparing China for a war, we should take him seriously. But बात यह है कि what should we do to derail him? उसके लिए ये मानसिक संतुलन और मानसिक दृढ़ता चाहिए, और उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा. राइट. एक और one more pointer which has come is that is China's exports have fallen. अगर आप देखोगे तो इस आर्टिकल में दिया है their military sales and arms sales fell by nearly 25% in a 4-year period from 2018 to 2022. So if that has fallen and their defense industries are going full steam, have they stocked up their ammunition? Have they stocked up their supplies, etc., etc.? That means they're preparing for war. They're preparing for an eventuality of a war. That is one. The second way of looking at this is that if they're not able to export ammunition and arms, their economy is being hit. And economy is going down, which is a very important factor in this whole story. Okay. Right. This is an article which came, says China military, how Beijing is pushing forward its plan for a powerful modern armed forces. is the सबको पता है कि 2035 तक fully mechanized होंगे, 2047 तक they want to become the world beaters, etc. 2027 तक they want to be a modern army. All those nonsense is there all over. That is not important for me. That is only modernizing the armed forces. Right. इसका problems क्या है? That is more important. Right. Then ये डिबेट है कि चाइना और यूएसए का तुलना किया जाता है और ये बताया जाता है कि कौन सा फौज ताकतवर है. चाइना बोलता है हमारे पास सबसे बड़ा आर्मी है, हमारे पास सबसे बड़ा नेवी है आजकल, और यूएसए भी बोलती है कि भाई जिस तरीके से चाइना आगे ऊपर उभर रहा है तो उनका आर्म फोर्सेस आर स्ट्रांग. यस, दे हैव मास, they have tremendous mass, but we have to look beyond this mass. That's what my whole story is today. सबसे पहले ये जो फौज है ये सिंगल चाइल्ड आर्मी है. राइट. क्यों? फ्रॉम द 70s, लेट 70s, they had the single child policy. अभी तक सिंगल चाइल्ड ही चल रहा है. पॉलिसी बदली कर दिया, वो जो भी बच्चा अभी पैदा होगा वो 30 साल के बाद फौजी बनेगा, 20-30 साल के बाद. अभी क्या है, पूरा देश सिंगल चाइल्ड. इनमें देखिए, इनमें कोई भाई ना बहन है. सब अगर है भाई बहन है तो इट्स अ कजन और एन अंकल और समथिंग लाइक दैट. दिस इज अ फनी नेशन. एंड एनीवन हु इज 50 to 60 years old is a single child. So all the complete army is a single child army. So how will a single child fight? Is he good enough to fight? क्या चाइना में उनके माँ बाप एग्री करेंगे कि वो अपने बच्चे जाके देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? उनको प्रोत्साहन करेंगे कि भाई बच्चे तुम फौज में जाओ? मुश्किल. ये है नहीं. राइट. The evidence is that it's the other way around. In UN, sometime back, one peacekeeper died, and there was a big backlash at home. How can someone kill a Chinese abroad? I sent him because everyone thought, since he's a Chinese, nothing will happen to him. That's the hawa which is within thing. No one will touch a Chinese peacekeeper. Well, they killed Chinese peacekeepers, and that lot of peacekeepers were saved by the Indians, incidentally.
Otherwise, they would have been massacred in some place in Africa. So, mentally, sacrifice of life for the nation, the supreme sacrifice which you have to make in the armed forces, is absent. If that is not there, the army and the navy and the air force lacks motivation to fight. As simple as that. Period. Next, the geography of China is weak. The geography of China is that it is surrounded by hostile people. The other way of looking at it is so hostile that it makes everyone else hostile to China. उसका चाइना का रवैया इतना तीव्र है और आक्रामक है कि वो बाकी सब इसके ऊपर भी आक्रामक रवैया अपनाते हैं. ये बात कभी समझ में नहीं आता हमें, क्योंकि चाइना के हमारे लिए चाइना एक थ्रेट है, पर चाइना के लिए अनेक थ्रेट है. ये थोड़ा मैप थोड़ा देखेंगे आगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी है. अब देखिए पूरा मैप. ये जो एरोज हैं, ये हैं जो उन्होंने 2021 में ट्राई किया था, 2020 में 2020 में जो हुए. अब देखिए, आप पैसिफिक में देखिए और साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द देखिए, जो छोटे छोटे एरो हैं वो वहाँ के साउथ कोरिया से लेकर ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब दे आर अगेंस्ट चाइना. एंड और तो और अभी यूएसए भी आके बैठ गया फिलीपींस में 4 बेस बना के. तो एंड द चाइनीज richer area and more prosperous area is along the west coast, on the east coast. They have to protect that. So that is one part. पिछोड़े में इंडिया है, और ये जो इनका फ्रंट डोर और रियर डोर के बीच का फासला 5000 किलोमीटर है, और दे हैव टू फाइट अक्रॉस 3000 kilometers of barren place called Tibet. They are actually against the wall. We don't understand this. Right? One. Number two, you always today hear they've got 3 aircraft carriers, they're going to build 10 aircraft carriers, वगैरह 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 वगैरह. मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और येलो सी जो चाइना के तट पे हैं, ये सब शैलो सीज हैं. इसमें आप बड़ा नाव नहीं लगा सकते और ना लेके जा सकते हो. उसमें दे आर लिमिटेड चैनल्स टू गो आउट. अगर वो चैनल्स ब्लॉक हो गए तो चाइनीज नेवल फोर्स कैन नॉट गो आउट. इफ इट गोज आउट इट कैन नॉट कम बैक अनलेस दैट इज सिक्योर्ड. दैट इज देयर प्रॉब्लम. And if they don't secure their front door and come at with all their might at the rear door at India, they will be finished off in their front door, in their most prosperous eastern line. So they have a double door problem, a front door and a back door problem, which they'll never get out, which is a major weakness which we have to exploit. And that's what Quad is all about. Okay. राइट, दिस इज अ थिंग. आप देखिए, ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन नेशंस जितने हैं, राइट, दे एक्चुअली सराउंड चाइना. चाइना इज कंटेन्ड टिल सच टाइम दिस डजंट गो अवे, टिल China does not get hold of Taiwan and some part of Philippines and some part of the islands between Japan and Taiwan. China cannot break out of this stranglehold. If it cannot deploy its navy, it's not an ocean-going navy, it's not a blue water navy, it remains a brown water navy. So that's the first thing one has to understand. The geography of China does not permit China to become a superpower. The demography of China does not permit the PLA to go beyond a point in terms of morale, motivation, and fighting ability. Now, this is an analysis. You just read this, which is important.
The introduction of advanced weaponry to a military force that is ill trained and ill managed will not result in a PLA that can achieve the party's strategic objectives. What are the party's strategic objectives? The party's strategic objectives that PLA will assist it and ensure that it becomes a superpower or a great power, whatever. Okay, but if the force is ill trained and ill managed, it cannot help. However, the new hardware enables Beijing to perpetuate its projected image of military strength while concealing continued shortfalls related to military reform. So, in any military, there are two aspects to the whole story. The first is what is your military strength is all about, do you have good hardware? To add, do you have the capability to handle that hardware? In China, the second one is suspect. The first one is also suspect. Why? I'll give you reasons. The first one is suspect because most of the new hardware which China is bringing into thing is not tested. It's not tested in battle. So its efficacy in battle is something which we don't know. That's the first. The second thing is in any force, you cannot have all new equipment, which China is having. As it's expanding, it's getting a lot of new equipment. If it's all new equipment, you have to train on that new equipment. You have to get through the teething problems of that new equipment, and you have to maintain that new equipment. So economically, new equipment costs more. It costs more to buy, and it costs more to maintain. China is going through that problem. That is why you'll see in many other countries, a lot of Chinese equipment is lying useless. So because it's not tested, it's not battle tested. And China has not been able to battle test most of its equipment because it has not been in battle. You need to be in battle to test your equipment. That's not the case with even Pakistan or America or India or many countries. What is the problem which Russia has had? Russia has battle tested its equipment in Syria, in Lebanon, in the Middle East or the West Asia. But it did not have the manpower, it did not have the skill, it did not have the training to execute warfare. It is failing. It is militarily failing against a force which it was expected to finish off in 1 week. So these two things, two sides of warfare, it is now China is realizing that they have a problem. But communists are communists, they'll talk the way they want to. Okay. This is important. This came about 4 months back or 5 months back. Chinese military short of troops trained in high-tech operations. This is from PLA Daily, and this is found. This is though I've shown this from excerpt from South China Morning Post. It just hit worldwide all media. What have they said? They've said that they don't have enough commanders, and they don't have enough commanders who are trained, and even the ship executive officers and commanders have not been able to clear the tests which are mandatory for command. If you don't have that, you go nowhere. They say it is better to have a lion commanding an army of sheep than a sheep commanding an army of lions. My question is the Chinese PLA an army of sheep commanded by sheep? Right. Look at this. They're recruiting women flyers to fly carrier based. Because why? They don't have pilots. The men are not enough to fly their planes. It's a different thing that their carriers don't have planes also. These are the things you see this, and then they're looking at junior high schools
for aircraft carriers. So this is a case of Navy and aircraft carriers. So they might have 10 aircraft carriers. What's the use of a 10 or 3 aircraft carriers without the ability to fly off them, without the ability to command them? It's just another ship. You might as well use it for container traffic. So there's a huge problem with the PLA Navy, which many of us, जब lot of these analysts, जब ये विशेषज्ञ बोलते हैं, ओ पीएलए के पास ये है, पीएलए के पास वो है, सब कुछ है, वो आसमान छू सकते हैं, ये सवाल नहीं पूछा जाता है, ये सवाल कभी भी बताया नहीं, इसका जवाब नहीं दिया जाता, क्या उनके पास काबिल आदमी हैं जो उसको चला सकते हैं? आप गाड़ी, अगर आप एक नवसिखिया को BMW दे दोगे तो 2 मिनट में आपको BMW का WMB करके दे देगा, या ऐसे जाके टकराएगा एक पूरा BMW है ना, आधा BMW हो जाएगा और आपको दे देगा हाफ। ये प्रॉब्लम है उनके पास, राइट। ये जो कवर है ये बार बार आता रहता है, हर दूसरे तीसरे महीना। चाइना मिलिट्री रिलैक्सेस फिजिकल rules for non-combat high-tech troops. Their army is being, a lot of the backroom jobs are being done by unfit soldiers. That's dangerous. What happens if this front line crumbles? Someone from the back room has to go forward. From the reserves have to go forward. इनका है ही नहीं, इसका मतलब खोखला है अंदर। और एक पुराना कहावत है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। अगर आपका बॉडी ठीक नहीं है तो आप क्या लड़ाई लड़ सकते हो? और लड़ाई लड़ने के लिए आपका मानसिक दृढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे ख्याल में पीएलए में नहीं है। अगर आप अगर 360 डिग्री देखोगे तो ये प्रॉब्लम का इट कम्स आउट वेरी एविडेंटली, राइट। ये जो मैं बोल रहा हूं, आप सोच सकते हो यार ये बुढ़ा जनरल क्या बोल रहा है, ये कहां से आ गया? बट ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये their leaders like Hu Jintao and Xi Jinping have said this. Hu Jintao felt there were two incompatibles in the, ये इनका है पंचशील, 5-point formula, 2-point formula, 10-point formula. China में this is common. So they said there are two incompatibles. This was coined by Hu Jintao. What are the two incompatibles? PLA's level of modernization does not meet the requirements of winning wars under informatized conditions, and its military capability does not meet the requirement of carrying out its historic missions. These are the two incompatibilities. And this was evaluated by Hu Jintao. He questions the PLA's capabilities to fight and win wars and perform the many other missions it may be assigned, such as disaster relief and anti-terrorist operations. आपने कभी सुना कि चाइना के लोग जाके एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किया? आपने कभी सुना कि दे डिड डिजास्टर रिलीफ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 में जब सुनामी हुआ था, इंडियन नेवी और यूएस नेवी ही दो मात्र नेवी थे जो सुनामी के बावजूद they went into the Indian Ocean to rescue people. At one point of time, it was beyond the US Navy, it was the Indian Navy which came to the fore. The Chinese Navy never left their ports. उन्होंने चोंच भी बाहर नहीं निकाला। ये हिस्ट्री है, ये कोई कल्पना नहीं है। और इसी की वजह से late Shinzo Abe said, look, here is a navy which is so good, and here is a country which has changed, and we should have Quad. Quad जो है उस सुनामी से ही बना,
और जहां हमारा इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई किया था, सो देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। तब से अभी तक चाइना ने एक डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन नहीं किया। तब से अभी तक हमने यमन से लेके आए, कुवैत गल्फ वॉर से लेके आए लोगों को वापस, वुहान से लेके आया हम, और हमने नेपाल को मदद किया और बहुत कुछ किया हमने, ठीक है। और वो यूक्रेन से भी अभी हाल ही में हम सबको इवैक्यूएट किया, चाइना ने नहीं किया। चाइना ने उनके अपना एक नागरिक को भी बाहर नहीं निकाला, ना पीएलए को भेजा, ना कुछ नहीं किया इन्होंने, राइट। 2015 में we first codified this campaign of military reform, right? When 2015 ज्यादा दूर नहीं है, 7 साल पहले, he saw a military struggling to meet the requirements of conducting local war under informatized conditions. उसका अपना आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं था। उस वक्त इसने क्या किया? He introduced the concept of networked warfare based on persistent surveillance and reconnaissance coupled with precision guidance munitions. Xi Jinping के मुताबिक there has to be net-centric warfare, precision guidance or surveillance. And he has been pushing the PLA into this direction कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करो, फायर पावर इस्तेमाल करो, रिकॉनेसेंस इस्तेमाल करो, स्पेस इस्तेमाल कीजिए, नेटवर्किंग इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ। पर इनका जो भी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है उसमें मैनूवर नहीं है। लड़ाई जो है दो चीजों के भरोसे के ऊपर लड़ाया जाता है, एक फायर और दूसरा मैनूवर। जो फायर एंड मूव या फायर एंड मैनूवर नहीं कर सकता वो आर्मी कभी जीत नहीं सकता। और यही बात रशिया में दिखाई दे रहा है, रशिया यूक्रेन लड़ाई में। इफ यूक्रेन हैज बीन होल्डिंग आउट अगेंस्ट सच अ मैसिव ओवरमैच इन रशिया, against Russia, it is because of their ability to fire and maneuver. Otherwise, they would have gone by now. We had this capability. We showed it in Bangladesh. We showed it in Kargil. We had this capability to fire and maneuver. Major problem with China. We showed this to them when we outmaneuvered them in the Kailash range. जब हम बंदर की तरह ऊपर उनके सर पे जाके बैठ के नाचना शुरू किया, तभी तो वो पीछे हटे। At times, maneuver does what fire cannot. At times, fire does what maneuver cannot. इसका जो तालमेल और संतुलन is what will win wars. और मेरे ख्याल में ये मेरा पूरा दृढ़ निश्चय है कि रशिया के पास ये संतुलन नहीं है और चाइना के पास तो बिल्कुल नहीं है। ओके, दिस इज सम एक और चीज है। इन्होंने बोला कि 3 वेदर्स, ये सवाल पूछा जा रहा है बाय शी जिनपिंग एंड कंपनी कि वेदर द पीएलए कैन मेंटेन द पार्टीज एब्सोल्यूट लीडरशिप। ये अहम है, मैं दोबारा बताऊंगा इसके बारे में। वेदर इट कैन fight victoriously when needed, whether commanders at all levels are competent to lead troops and command in war. The first thing is the most important thing. Whether PLA can maintain the party's absolute leadership. इसका मतलब यह है the party has to be political in nature. Sorry, the army has to be political in nature. The PLA is a political animal. जो आर्मी पॉलिटिकल बन जाता है वो राजनीतिक पाबंदी में आके वो प्रोफेशनलिज्म छोड़ देता है। फिर क्या है कि अगर आपका पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि क्या आप कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई देखो आप लीडर हो सकते हो पर ये हासिल कर सकते हैं और ये हासिल नहीं कर सकते हैं, ये मुनासिब है और ये नामुनासिब है। The
party discipline is more important than the professional discipline. That is the difference. And the third point भी बहुत अहम है, whether commanders at all levels are competent to lead troops and command in war. वो पहले हमने already बता दिया कि that's a question mark, and that's a question mark which they themselves have attended when commanders and captains of ships are not able to pass exams and they have vacancies which they cannot fill because of this, then you can imagine the fighting force. All this is 7 years back. Armies don't change in 7 years. The character of people don't change in 7 years. 7 साल में इतना बड़ा आर्मी का सोच विचार और चाल चलन अब बदली नहीं कर सकते. ये बदली होगा लड़ाई में, पर लड़ाई तो हुआ ही नहीं. राइट. जी जिनपिंग का बोल है, ये एक भी 2015-16 में ये बात हुआ, 5 इनकेपेबल्स, कि क्या PLA ये कर सकते हैं. इनका खुद का इंटरनल सवाल है. क्या है ये फ्रॉम 2015, the 5 incapables from 2015, probably the most important criticism of all. It emphasized that some officers, कि कुछ officers cannot judge situations, उनका judgment poor है. Some officers, they cannot understand higher authorities' intentions. They cannot make operational decisions. They cannot deploy troops nor deal with unexpected situations. 5 incapabilities. बहुत बहुत ही गहरा incapabilities है. Right? Let's second part देखिए. These are the basics of combat leadership. आप ये 2 incapabilities, 2 inabilities, 5 incapabilities और ये 3 weathers आप जोड़ लो तो the fighting capability and the planning capability of the PLA is questionable. And we have to concentrate on that. Okay. आप बोल सकते हो यार ये तो ऐसे बोले जा रहे हैं, पर इसका जमीन के ऊपर क्या असर है? It is my belief that the PLA is a reticent army. The China and the PLA are reticent to employ force. पिछले 10 साल में इंडिया ने बहुत जगह अपना फोर्स इस्तेमाल किया, चाहे डिजास्टर ऑपरेशन या टेररिस्ट ऑपरेशन या यहाँ तक कि बालाकोट में हमने अपना हवाई जहाज भी लगा दिया. पाकिस्तान ने भी किया. पर चाइना जहां भी मुठभेड़ में की अवस्था में आ गई है, वो पीछे हट गए. देखिए बहुत टाइम अभी पिछले एक हफ्ते पिछले 1 साल और 2 साल में बहुत चाइना के लोग पाकिस्तान में मारे गए. अफ्रीका में अभी हाल ही में मारे गए. अफगानिस्तान में भी अभी कुछ हो गया. पर कहीं आपने ये नहीं सुना कि चाइना अपना PLA को भेज के इनको रक्षा करेगा. तो आए ही नहीं. आप USA को देखिए, जहां भी उनका नागरिक का नुकसान होता है या खतरे में आता है, वो अपना फौज भेज देते हैं. हमने भी जहां भी हमारे नागरिक खतरे में हैं, हमने अपना फौज भेजा और उनको वापस लिया है सुरक्षा के साथ. आप उसमें फौज भी इस्तेमाल किया, इंडियन एयरलाइंस भी इस्तेमाल किया, एयर इंडिया, और डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल किया. सब कुछ जो नीति अपनाया था पर हम लेके आए. चाइना ने नहीं किया जब इनके लोग मर रहे थे. राइट. अफगानिस्तान में ये बोला जा रहा था पिछले साल कि भाई जैसे USA चला जाएगा, चाइना आ जाएगा और वहाँ खान होंगे, उनके सामग्री होंगे, उनके मिनरल्स होंगे, वो सब लेके ये बेशुमार दौलत बनाएंगे. कहेंगे आज तक ये कुछ कर पाए? तालिबान का तालिबान वैसे ही है, चाइना वाले मर रहे हैं वहाँ. इनका जो एयरक्राफ्ट
ताइवान, ताइवान के बारे में थोड़ा देर में भी बात करूंगा। ताइवान के और आंख दिखाया उन्होंने और कुछ नहीं, 2-4 मिसाइल वगैरह फायर किया और कुछ नहीं, राइट। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके तट छोड़ के नहीं गया आज तक। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से एक ऑपरेशनल है, एक अंडर ट्रायल्स है और एक अभी इट्स इन floating trials. But their aircraft carriers have not left South China Sea. Our aircraft carriers have done deployments right up to Malacca Strait to cover Malacca Strait and the west coast of Africa, east coast of Africa. And they've gone deep into Indian Ocean. There's a difference. Right. यहाँ तक Pangong Tso में, just by our maneuver, they went back 9 kilometers, they couldn't hold. So if you see their performance, whether against terrorism, conventional operations, open ocean operations, or maritime operations, or disaster situations, their performance has been below par. So what's the use of having such a huge force which cannot get you your strategic objectives? Obviously, this force has problems, and we know. हमने अभी पिछले 15-20 मिनट में आपको इनका प्रॉब्लम जितने हैं मैंने बता दिया, तो इसको हमें एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, राइट। दे टॉकिंग नाउ ऑफ एक्टिव डिफेंस इन अ पीपल्स वॉर। व्हाट इज दिस एक्टिव डिफेंस? कि डिफेंड कर लो। अभी वो खतरा वो अपने आप के ऊपर महसूस कर रहे हैं। दे आर नाउ गियरिंग टू फाइट अ वॉर ऑन देयर मेन लैंड, फॉरगेट गोइंग आउट। ओके, अभी the president of Taiwan, Tsai Ing-wen, went to USA, met the speaker there. पिछले बार जब नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी, इन्होंने फायरिंग सब कुछ कर लिया। आज के दिन 6 महीने के बाद ये गए वहां, यूएस स्पीकर को मिला, ये बोल रहे हैं कि हम डिप्लॉय करेंगे, हम फायरिंग ड्रिल करेंगे, और घोषणा भी की कि 3 दिन के लिए फायरिंग करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि हम अपना टेस्ट कर रहे हैं जी, एबिलिटी टू कंट्रोल सी एंड एयर अराउंड ताइवान, और हम फायरिंग ड्रिल करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, पर तेंगा कुछ नहीं होने वाला है। और तो और पिछले बार इन्होंने जो किया था। अभी चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हिलाया, यूएस ने भी हिला दिया। यूएस भी आके वहां खड़ा हो गया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। चाइना के साथ मैंने बोला ना, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल, एक अंडर ट्रायल्स और अंडर ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनल नहीं है पूरा, और तीसरा इज अंडर सी ट्रायल्स, मतलब एक ऑपरेशनल है। इन चाइना यूएसए ने आके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया। ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस। सो व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं पीएलए के बारे में, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हमारा फौज जो है ना बहुत ताकतवर है, सिर्फ हम अपने आप को पहचानते नहीं है। अभी ये ढूंढ रहे हैं कि रशिया के साथ कोऑपरेशन करना है। रशिया के साथ कोऑपरेशन करके क्या सीखेंगे? रशिया खुद जूझ रहा है, उनका मैनूवर नहीं आता, फायर पावर तो इनका खत्म हो रहा है, एमिनेशन कम हो रहा है उनके पास। उनके साथ उनका जो जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन का लड़ाई का पूरा अनफोल्ड किया है, द वे दे हैव गॉन अबाउट द यूक्रेन ऑपरेशन इज सो बैड। व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम देम? व्हाट विल चाइना लर्न? Whatever it learns is good, because it will be useless. They want to do with Cambodia of all people. Why? They want to ensure that Cambodia stays with them and not goes away to China, like Vietnam has already done, और मलेशिया। उस इलाके में अगर देखोगे 2 ही देश हैं जो चाइना के साथ हैं, वो है लाओस और कंबोडिया, बाकी सब आर अगेंस्ट चाइना। ओके, अभी ये डर है कि नेटो भी आ रहा है, इधर एक्सपैंड हो रहा है। अगर नेटो भी आके यहाँ खड़ा हो गया तो इनका बैंड बज गया,
राइट. और जापान इज अपग्रेडिंग. जिस तरीके से हम सोचते हैं चाइना के बारे में, चाइना वाले लोग जापान के बारे में सोचते हैं. चाइना is scared of the Japanese, and the Japanese are rearming themselves, and they're worried. The Chinese are worried, right? वो 10 बार सोचेंगे वो इंडिया की तरफ या जापान की तरफ देखना आज के दिन. क्यों? Not only is Japan arming itself, India is arming itself. The Quad is active. USA is redeployed in the Indo-Pacific, in Philippines, and Japan and India have started air force drills. It's very dangerous for China. Okay, the outlook is poor, and you have an inexperienced PLA. The shift is this. The shift is this. They are looking at active defense on their mainland. Till last year, they wanted to go and, hardpaw everyone outside. Today, they are looking at defending their own mainland. ठीक है? ओके. ये तो हमने देख लिया. ये मिलिट्री एक्सपेंशन के बारे में ये नाखुश है. Right? They don't want to get in. This is the right. I didn't want to do this. Right? इस हालत में हाल ही में ये खबर आया कि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कुछ प्लेसेस में चाइना का नाम लगा दिया. और वही नहीं, वो अक्रॉस दी LAC 2 शहर बना रहे हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं. ये कर तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, बट इनका खुद का व्याख्या देखिए कि थोड़ा डर भी है कि कहाँ इंडिया के साथ टेंशन बढ़ गया. अगर इंडिया के साथ टेंशन बढ़ गया और कुछ हो गया इधर, ऐसे कुछ व्याख्या हो गया, तो उनका उस एरिया में भी प्रॉब्लम होगा. या आदमी एक साइड देख सकता है या दूसरे साइड देख सकता है. ऐसे नहीं कि ये एक आंख इधर और एक आंख इधर, बैंक की तरह. वो तो केस्टो मुखर्जी टाइप बन गया ना. फिर इधर भी देखो उधर भी देखो. सो दे हैव प्रॉब्लम्स. और जहां तक वो चाइना का नाम लगाना है नहीं लगाना, वो तो भाई 2003 से बोल रहे हैं. कभी कभी वो फेंक देते हैं कि चुरला फेंकने वाली बात है. वी शुड बी वेरी काम अबाउट इट एंड से गेट लॉस्ट. आई थिंक हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सही तरीके से बता दिया. इसके से ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है. और ये भी प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि 22 ब्रिटिश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग companies want to set up shop in India for many reasons. अगर वो 22 फर्म आके इन्होंने यहाँ दुकान लगा दिया तो इंडिया का फौज का मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा. और ये बेचने लगेंगे वहाँ जापान और कोरिया और ताइवान को भी ये बेचने लगेंगे, इंडोनेशिया वगैरह. प्रॉब्लम किसको? चाइना को. एक चीज नहीं है. जब हम PLA को परखते हैं, ये पूरा देखना पड़ेगा. 360 डिग्री व्यू लेना पड़ेगा. राइट. एक और है, ये इनको प्रॉब्लम है उनको. ये इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि वो अभी उनके संकोच है ये कि इंडिया कोड साउथ वेस्ट एशिया विद अफोर्डेबल मिसाइल्स अमिड साउथ चाइना सी रोज एंड रशिया यूक्रेन वॉर. हम उनको आर्म कर रहे हैं. पहले हम सोचते थे कि वो अपना श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आके अपने आर्म्स बेच रहे हैं. हमने शुरू कर दिया. ये अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, इट कुड अंडरमाइन चाइना एफर्ट टू एस्टैब्लिश मिलिट्री सुपीरियरिटी इन दिस रीजन. It will not it is not it could undermine, it is already undermining. Or it is not certain that China's military is superior to any other military in this region. ये भी मैं बता रहा हूँ मैं आज के दिन. Definitely not in the Indian Ocean. उसके इर्द गिर्द चाइना, in the Pacific, Western Pacific and the South China Sea, East China Sea and the LOC. ठीक है. The way the other nations are arming themselves and having relations between each other, developing military relations between each other, and the return of USA with 4 bases in Philippines has actually contained China. A lot of talk, a lot of hot air.